Wait if you want to be a cabin crew. Wait if you want to be an air hostess. Wait if you also have a dream to fly in the plane, and wait and watch it if you also want to join aviation industry. Ladies and gentlemen, many youths of India and the world are having a dream to join aviation industry. Apart from this aviation industry, some people don't have any option to just join because they have a dying dream. They have a very deep rooted thought and passion to just join this industry. But without knowing and without understanding the facts, the methods, the tips, the tricks, the terminology, the methodology, the training, can you become a cabin crew? Of course not. Can you join this aviation industry? Of course not. So today I am here to just, give you the guidelines, to tell you the tips and tricks to just, join aviation industry, to be a right cabin crew and to be a right air hostess and host. And you would be surprised after knowing so many factors and facts. But you have to understand one of the facts, whether it's a fact or a myth, but I could say that it is a fact. If you want to be an air host or air hostess, you are a waiter in the air. Like for example, at the ground, you are a waiter in the 5-star hotel. Hello, sir. How may I help you, sir? Are you okay, sir? Are you comfortable, sir? So same way, if you are a waiter or serving personality in the air, in the plane, you become air host or air hostess. But ladies and gentlemen, when you talk about or when you think of being an air host or air hostess, you must have great desire, passion, rooted thoughts, your vision, your own belief system, your own thoughtful mind behind or for being a cabin crew and air host. I ask to many girls and boys that why do you want to come to this industry? They say, oh, I want to fly in the air. I have a childhood dream. I have seen that girl. That girl was looking so beautiful in this costume of, aviation industry or a cabin crew. Like, come on, what a childish you are doing. Ask to yourself, you are just, going to be an air hostess for just, wearing a costume and a dress. Have you ever asked this question to yourself that you're going to just join aviation industry just to wear a costume, wear a dress? Of course, this is not a logic. I want to be a teacher because I will get opportunity to speak. Is it a logic? I want to be a pilot because मैं बादलों को देखूंगा. Is it a logic? बादलों को देखना है तो वैसे ही 5,000 रुपए का टिकट कटा के बादल देख लो. ड्रेस पहनना है तो ले जाओ 3-4 हजार का ड्रेस मिलेगा और आओ भाई पहन लो और यू कैप्चर योर फोटोज एंड मेक रील्स और रील्स बनाओ इंस्टाग्राम पे. ड्रेस ही पहनना है तो ऐसा कुछ लॉजिक्स नहीं होना चाहिए. सबसे पहले आपको थॉटफुल माइंड बनाना है कि आप एक्चुअली में क्यों एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं. टू गो इन द एविएशन इंडस्ट्री यू मस्ट हैव अ रीजन टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. This may be a reason. You must have the reason to meet strangers, new people. This may be the second reason. You must have the logic and the reason just to travel internationally, or you can become a cosmopolitan. You can explore the entire world and you can just visit new places. Like you can visit Thailand, you can visit UAE, you can visit Saudi Arabia, you can visit USA, you can visit Japan, you can visit Canada, you can visit Australia, you can visit Bangkok, you can visit Hong Kong, you can visit exact other Spain or France, right? So you have the opportunity to explore multi nations and countries. That's why you want to come to this industry. In your India, if you are in the domestic flight or domestic airline, you have opportunities to explore Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Delhi, Maharashtra, Goa. All these cities you can explore through being or by being a cabin crew and air hostess. These may be the reasons, or these should be the reasons. I love interacting to the people. I love serving the people. I love connecting the people. I love hospitality. That's why I want to be a cabin crew. Right. These are the reasons, logical reasons, I could say. Now, coming to the next point,
There are two things, there are 2 points: the hardware, the software. The hard part, the soft part. For a cabin crew, air hostess, or just air host, hardware plays role, or hard part plays role, hard skills play role, but soft skills play more role, bigger role. But let's talk about hardware. Like, you must know that in what kind of aircraft you are flying. What is the speed of aircraft? Is it 700 per hour, 700 kilometer per hour? Is it 900 kilometer per hour? Is it 925 kilometer per hour? This is a hard part. You must have knowledge and information about the cockpit. You must have knowledge and information about L seat. You must have knowledge and information about the small hole in the window to balance the aircraft and to balance the airline. You must have knowledge and information about double standards of the food, for the food to the double, or the two pilots, that both pilots do not eat the same food just due to, or because, for avoiding the food poisoning. If there are two pilots in the plane, one eats this food, another eats that food. Both cannot eat the same food. You must have information and knowledge on it. These are the hard known factors that you have to know. You must know when you are traveling what kind of damages can be there, what kind of parachute you can use, where is the oxygen, how to build the, how to seat the belt, or how to tie the belt exactly, right? These are some hard skills which you must be aware. You must know how to swim. You must know how to actually just rescue all the passengers. These are the hardcore skills which you must have under your training, under your mentorship program. You will be taught and trained. But now, coming to the soft skills, if you have a dream, have a vision, mission to be a cabin crew, so what you need to understand? You need to understand, first of all, you have to be a right human being. A right human being means, what am I saying? You have to be a human being. A human being is not a robotic machine, is not a machine, is not a chat GPT, is not artificial intelligence. So a human being has a job to connect, serve, hook, understand, show sympathy, show empathy, solve the problems, connect the team, do the leadership, serve to the people, and make all people happy and comfortable in the plane. These are some great soft skills which you need to build and develop before you dream to be a cabin crew and air host or air hostess. You have to have these, skills. Without these skills, trust me, nobody will hire you, nobody will give you opportunity. Of course, age matters. 18 to 27, age matters. After your marriage, you have no chances to be a cabin crew. That matters. Of course, height matters. 5 feet 0.1 inch height matters. If you have a height of 5.1, you are okay to go. More than that, you are okay to go. But less than that, you are not okay to go. But the point, apart from these biological, are the God-gifted things, you have to develop few tips, tricks, and skills, what I am going to count. Skill number 1. Please mind it, it's very important. Skill number 1, the soft skill, communication skills. It's very, very important. Before you wear costume, before you wear dress, before you just use lipstick, before you just make the jura and the bun, before you put clip and apply a good collar and a tie and a skirt and shoes and sandal and the uchi wali heel pehen ke dance basanti, walk basanti, you have to just have a great skill, that is actually communication skills. This is the tip number 1, the skill number 1. Have great, impactful, insightful, effective, interpersonally, and just a great communication skills. Through your communication, you can solve all the issues and problems. Why is it so, ladies and gentlemen? Because I have seen many times whenever I have traveled in the plane, whenever somebody argues with the air hostess, बेचारी वो लोग सिर्फ मुस्कुराती हैं.
और अच्छे से बात करती हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझती हैं, एट एनी कॉस्ट दे डोंट गेट एंग्री। भले से वो प्लेन लैंड करने के बाद अपने होटल के रूम में जाके चिल्लाएं और चीखें और ये बोले कि कौन सा ऐसा पैसेंजर आज आया था, मां कसम अगर यहां मिल जाए तो उसका थोपड़ा गड़बड़ कर दे मार के। लेकिन वहां पे अपने थोपड़े पे मुस्कान रखनी पड़ती है, अपने थोपड़े पे अच्छी अच्छी अच्छा अट्रैक्शन रखना पड़ता है। एंड आई हैव सीन ऑल द एयर हॉस्टेसेस दे डू, बट उसमें से कुछ एयर हॉस्टेस बेचारी बोरिंग हो जाती है तो उनका प्रमोशन भी नहीं होता, उनका डिमोशन हो जाता है, एयरलाइन इंडस्ट्री उसको निकाल देती है। दैट्स व्हाई, हेलो सर, वेलकम सर, so you should have great and effective communication skills, like you welcome with a great gesture and great tonality. Hello, sir. Welcome to Vistara 2.0. Welcome to Indigo, sir. Welcome to Air India, sir. Welcome to Qatar Airways, sir. Welcome to UAE Emirates, sir. Welcome to Saudi Arabia Airlines, sir. Welcome to Kuwait Airlines, sir. Welcome to USA. Welcome to Boeing 775, sir. Welcome. You must have great communication skill. The second point, that's very important, team building. Please build your team. सबसे खास बात प्लेन की ये होती है, जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं ना, वो आपस में बहुत कनेक्टेड होते हैं, बहुत कनेक्टेड। एक लेके आ रही है और एक बॉटल से पानी निकाल रही है, एक वहां से फोन की, वहां से वो तुरंत कनेक्ट कर गई, उसने किसी से बॉटल मांगा, वो कनेक्ट कर गया। अब मैं आपको एक हिंदी में छोटा सा वाक्य बताता हूँ। व्हेन आई वाज गोइंग टू गोवा, मैं जब गोवा जा रहा था तो हमारी फ्लाइट 20 मिनट तक नागपुर के उसमें जो है एयरपोर्ट के ऊपर नाच रही है, बिकॉज नागपुर का जो मौसम था वो काबिले तारीफ नहीं था, मतलब काबिले वर्स्ट था, खराब था, वहां पे लैंड हो नहीं सकती थी। लेकिन वो जो केबिन क्रूज के बीच में, जो एयर हॉस्टेसेस के बीच में जो कनेक्शन था ना, एक टीम कनेक्ट या टीम बिल्डिंग जो थी, वो बहुत काबिले तारीफ। एवरीवन कनेक्टेड टू वन अनदर एंड दे ट्राई टू शो अस कि कितना रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट है, कितना काम एनवायरनमेंट है। एंड दैट वाज द पॉइंट दैट विच कनेक्टेड मी, विच हुक्ड मी, दैट हाउ कनेक्टेड दे आर टुगेदर, and it's the best thing. So that it's skill number 2, I just told you, that build the team management skill or team building skill. The tip number 3 is leadership skills. Be a leader. When there is any problem, take it on you. जब कोई दिक्कत आए तो आप अपने ऊपर ले लो। और ये डोंट ट्राई टू थिंक कि जब मैं कोर्स करने लगूंगी तो मैं ये चीजें डेवलप करूंगी। नो, डोंट थिंक ऑल, जस्ट डोंट थिंक इन दिस वे। Please try to think and try to implement it just from starting an initial phase. Because personality development or grooming or soft skills development come from within and come from the initial and starting phase of life. Start implementing all these skills from just this moment and right now. Next, I'm coming to the skill number 4. Skill number 4 is all about stress management, right? You have a lot of problems in your family, you have a lot of problems in your personal life. Your boyfriend has cheated you, actually, right? Your girlfriend has cheated you, and a lot of mishappenings have happened with you, but you cannot show. You have to manage your stress. At any cost, you cannot show. Because in the hospitality industry का यही सबसे बड़ा दुख भरी, सबसे बड़ी दुख भरी कहानी है कि आप अपने दर्द को बयां नहीं कर सकते, आप अपने दर्द का इजहार नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर पेन, यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर ग्रीफ, योर सॉरो, योर सैडनेस, बिकॉज यू आर इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और एविएशन इंडस्ट्री ऐसी है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। तो यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस। नाउ स्किल नंबर 6, right? Skill number 6 we're coming, and this skill number 6 is very important that you have to just carry within or carry with you. That is to just solve the problems and solve the issues. Many people in the plane, I have seen many people, oh, I feel vomiting, my Wi-Fi is not working, my net is not working, I feel thirsty, come on, my kid is just crying right now, oh, my old dadaji is not happy, he is not it doesn't feel well. A lot of problems are there, even uncountable problems are there, and every customer, every passenger just complains on the problems, right? And what you have to show, okay sir, don't worry sir, please sir, okay fine sir, oh I understand, okay please relax sir, relax, okay I'll take care sir, do you want water sir? Sure sir, please.
वो आदमी भले से 10वीं बार पानी मांग रहा हो, फिर भी आपको मुस्कुरा कर पानी देना है। ये आपको एक आपके अंदर से वो चीज़ होनी चाहिए। आपको सारा अपना ईगो, सारा एटीट्यूड बाहर निकाल के फेंक देना है, अपने आप को सरेंडर कर देना है और उसके सामने नतमस्तक हो जाना है पूरी तरीके से, उसके लिए हाज़िर हो जाना है। मैं मुंबई जा रहा था, आई वाज़ गोइंग टू मुंबई, तो 4 लड़के लौंडे बैठे हुए थे मतलब। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, दे जस्ट आस्क्ड वाटर 10 टाइम्स। बस वही कि एयर होस्टेस पास में आ रही है, पानी लेके आ रही है, थोड़ा मुस्कुरा रही है, खूबसूरत लग रही है। और वो बार-बार पानी माँग रहा है। बेचारी एयर होस्टेस हमारी लड़कियाँ मुस्कुरा के पानी बार-बार सर्व कर रही हैं। तो मुझे लगता है ना कि इट इज़ द टफेस्ट जॉब टू हैंडल द टफ कस्टमर्स एंड द टफ पैसेंजर्स, बट यू डू इट एंड यू हैव टू डू इट। दैट्स व्हाई देयर इज़ अ बिग सैल्यूट टू ऑल द एयर होस्टेस। देयर इज़ अ बिग सैल्यूट टू ऑल द केबिन क्रू मेंबर्स बिकॉज़ दे face a lot of problems, a lot of hurdles, but they resolve it and they solve it. So problem solving skills is one of the greatest skills I could say, and that's very important. So all these skills you have to develop. Interpersonal skills you have to develop. Social skills you have to develop. All the soft skills you have to develop. You have to smile in any situation, but if the situation is to smile, right? You have to understand people. You have to understand people's emotions and problems. You have to empathize them, sympathize them, right? So you have to just inculcate all these things, and you have to study from right now about the aviation industry, airplane, aircrafts, and airlines, right? So that you can have knowledge and be out of the box, be unique, be offbeat. डोंट बी अ काइंड ऑफ की पर्सन गए ग्रुप डिस्कशन में बैठ गए और ऐसे बैठे हैं, कुछ भी विचार माइंड में नहीं, कोई थॉट नहीं है, आपस में ऐसे ही बैठे हैं। आपको लग रहा है कि बस कपड़े पहनने से हम तो केबिन क्रू बन जाएंगे। ये कपड़े पहनने से केबिन क्रू थोड़ी ना इंसान बनता है। स्कर्ट लिया और केबिन क्रू बन गए, लिपस्टिक लगाया और केबिन क्रू बन गए, जूड़ा बनाया और केबिन क्रू बन गए। नहीं, ये सारी चीजें ग्रूमिंग का पार्ट है, सब करना बहुत जरूरी है, बट डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो यहाँ से होता है। जब आपसे कोई पूछे कि बताइए, अगर नीरजा की तरह आपको, जैसे सोनम कपूर ने नीरजा में पोर्ट्रे किया है, कि आप नीरजा की तरह कोई ऐसा सिचुएशन आता है जब प्लेन हाईजैक हो जाता है, आतंकवादी प्लेन को जो हाईजैक कर लेते हैं, आप उस वक्त कौन सा कदम उठाएंगे? उस वक्त अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप लगेगा कि यार क्या बात है, क्या 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 दिमाग है, क्या सोच है। एक आपके सिचुएशन आ जाएगी, किसी को हार्ट अटैक आ गया प्लेन में, आप क्या करेंगे? सिचुएशन ये आ जाए कि पूरा खाना खत्म हो चुका है, पानी खत्म हो चुका है और 3 घंटे की फ्लाइट है और आपको खाने को मिल नहीं रहा है या पैसेंजर को नहीं मिल रहा है, आप उस वक्त क्या करेंगे? ये कुछ सवाल ऐसे बन सकते हैं। एक पैसेंजर मर गया प्लेन में, अब आप क्या करेंगे? पैसेंजर मर गया, एक पायलट जो है कूद गया, अब आप क्या करेंगे? तो मतलब ऐसे बहुत से टिपिकल सवाल, और ये कुछ ना कुछ ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ ना, ये आ सकते हैं, ये सिचुएशन पैदा हो सकती है। दिस सिचुएशन कैन बी जनरेटेड, और अगर इन सिचुएशंस का, इन प्रॉब्लम्स का समाधान आपके पास है तो नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं सकता। यू आर ऑफ बीट, आप कंपटीशन में हो ही नहीं, आप कंपटीशन के बाहर हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आप जितने इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, जितने केबिन क्रूज वाले ये हो, तो वो आपको पहले ही जो है, पहले वो आपको बस बोलेंगे कि ओके डू दिस डू दैट, ये स्टाइल, ये स्कर्ट, ये जूड़ा, ये लिपस्टिक, ये वो। ग्रूमिंग का मुझे कह दो या किसी भी इंसान को कह दो, 4 दिन के अंदर ग्रूमिंग सीख लेगा। मुझे आप बता दो कि आपको थोड़ा फंकी लगना है सर, मैं फंकी कैसे, जीन्स टी-शर्ट शर्ट निकालूंगा, इधर 2 बटन खोलूंगा, चश्मा का वाला मारूंगा, बाल थोड़ा स्टाइलिश करूंगा और फंकी लगने लगूंगा। आप मुझसे कह दो कि सर आपको एकदम सोबर, एकदम सोफिस्टिकेटेड लगना है, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको प्रोफेशनल क्लॉथ पहन के आना, मैं ब्लेजर डालूंगा, टाई डालूंगा, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट डालूंगा, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, पॉलिश मार के और घड़ी हाथ में लगा के बढ़िया तरीके से खड़ा हो जाऊंगा। ये जो ग्रूमिंग का पार्ट है ना, इट डज नॉट टेक दैट मच टाइम। टाइम लगता है इसको डेवलप करने में, बट आपको जो डेवलप एक्चुअली करना है, ये ग्रूम कर रहे हैं आप अपने आप को। हमेशा कोई बाहर की चीज से पहले आपको अंदर की चीज डेवलप करनी है। हमेशा बाहर की चीज से पहले अंदर की चीज डेवलप करनी है। माइंडसेट कैसा है, आपकी थॉट्स कैसी है, आपका विचार कैसे है, क्या आपका नेचर है, क्या बिहेवियर है, क्या आपका कम्युनिकेशन है। ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी डेवलप्ड, एंड इफ यू डेवलप ऑल दीज थिंग्स, नोबडी कैन स्टॉप मी। एंड देन ग्रूम ऑल्सो योरसेल्फ, डेवलप योरसेल्फ, be a crazy person, be a unique personality, and you can be a great cabin crew. Thank you very much. I hope this video is going to work for you. Thank you. God bless.